in front of the universe. What is our true worth? Today, my friends, we are going to understand what we humans really are when compared to the vastness of the universe. By the time you finish this, your ego might completely shatter, because once you truly realize how unimaginably large the universe is, you will begin to question where we even stand, and whether our existence has any real significance at all. You may find it surprising that the population of Earth has reached around 8 billion people, which sounds incredibly massive. But here is something shocking. Every single one of those 8 billion people could fit inside an area the size of Los Angeles, which is only about 1,300 square kilometers. Now think about that for a moment, because compared to this, our Earth is much larger, with a diameter of about 13,000 kilometers. The Moon, our closest celestial neighbor, has a diameter of around 3,500 kilometers. It is so large that approximately 100,000 Himalaya-sized mountains could fit inside it. And Earth is so massive that around 50 moons could fit within it. So pause for a second and ask yourself, where do you stand compared to something like Earth? Now let's go further. The Moon is located about 384,000 kilometers away from Earth. And within that distance, all 8 planets of our solar system could easily fit. Moving even farther, our Sun is about 150 million kilometers away from Earth, and its diameter is around 1.4 million kilometers. To help you understand that scale, around 1.3 million Earths could fit inside the Sun. Just imagine that, over 1 million Earths packed into one single star. It's almost impossible for the human mind to truly comprehend such immense size. So now ask yourself again, what is our worth compared to the Sun? Not just humans, even Earth and the Moon appear insignificant when placed next to it. But this is only the beginning. Jupiter, the largest planet in our solar system, is so huge that it can contain about 1,300 Earths within it. And yet, around 1,000 planets like Jupiter could fit inside the Sun. This clearly shows that the Sun is not just big. It is unbelievably massive, beyond normal understanding. However, even this is just the beginning of something far greater. Our entire solar system stretches across approximately 28.7 billion kilometers and contains 8 planets, 5 dwarf planets, millions of asteroids, and billions of meteoroids. The distance from the Sun to Neptune alone is about 4.5 billion kilometers. VY कैनिस मेजॉरिस से, जिसका व्यास 2 अरब किलोमीटर है और इससे भी बड़ा तारा है UY स्कूटी, जिसका व्यास लगभग 2 अरब 40 लाख किलोमीटर है। और अब तक का झांप सबसे बड़ा तारा है स्टीफनसन 218, जिसका फैलाव 3 अरब किलोमीटर के बराबर है। यानी इस तारे के अंदर सूरज जैसे 9 अरब 83 लाख तारे समा सकते हैं। ब्रह्मांड में अब तक इससे बड़ा कोई सितारा नहीं मिला है और इस तारे के सामने सूरज का अस्तित्व न के बराबर है। ऐसे में हम इंसान और हमारी धरती तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। जरा सोच कर देखिए, इस तारे के अंदर धरती का अस्तित्व मायने भी रखता है या नहीं। अब अगर हम बात करें ब्रह्मांड में इससे भी बड़ी संरचनाओं की, तो हम पहुंच जाते हैं कैट्स आई नेबुला के पास। यह आकार में 0.4 प्रकाश वर्ष बड़ी है, यानी प्रकाश को भी इसे पार करने में 4 महीने 26 दिन लगेंगे। यह ब्रह्मांड के सबसे विशाल तारे के मुकाबले कितना बड़ा है। इस नेबुला के अंदर स्टीफनसन जैसे लगभग 3000 तारे समा जाएंगे। और इससे भी बड़ा हेलिक्स नेबुला है, जिसका व्यास 5 प्रकाश वर्ष है, यानी प्रकाश को इसे पार करने में 5 साल लगेंगे। और इसमें स्टीफनसन जैसे 15,000 तारे रखे जा सकते हैं। इससे भी आगे है ओरियन नेबुला, जो 24 प्रकाश वर्ष चौड़ा है। और इससे आगे हमें मिलता है ओमेगा सेंटोरी कंस्टेलेशन, जिसका व्यास 150 प्रकाश वर्ष है। और अब तक जिन विशालकाय संरचनाओं को हमने देखा है, उन सबको अपने अंदर समाने वाली, इन सबसे करोड़ों गुना विशाल, ये है हमारी आकाशगंगा मिल्की वे, यानी मंदाकिनी आकाशगंगा, जो कि 1 लाख प्रकाश वर्ष के व्यास में फैली हुई है। यानी यह इतनी बड़ी है कि इसे पार करने में प्रकाश को भी 1 लाख साल लग जाएंगे। और आपको बता दें कि प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। हमारी इस आकाशगंगा में इस तरह के बड़े बड़े 400 अरब तारे मौजूद हैं और इतने ही ग्रह इसके अंदर मौजूद हैं। तो यहाँ आकर आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि यह कितनी
इतनी बड़ी है, इसके अंदर हमारी धरती खत्म भी हो जाए तो इतनी विशाल आकाशगंगा को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमारा सूरज भी खत्म हो जाए तो भी इसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा भी खत्म हो जाए तब भी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ब्रह्मांड यहां भी खत्म नहीं होता है। इससे भी आगे चलने पर अगर हम हमारी पड़ोसी आकाशगंगा एंड्रोमेडा की बात करें तो यह हमारी गैलेक्सी से 2 गुना बड़ी है। इस गैलेक्सी के अंदर 10 खरब तारे मौजूद हैं। अब तक जाने गए सबसे विशाल तारे स्टीफनसन से इस गैलेक्सी को भर दिया जाए तो इसमें 40,000 खरब स्टीफनसन 218 जैसे तारे आ सकते हैं। अगर हम और आगे पृथ्वी से 23 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर जाए तो हमें एक और आकाशगंगा मिलती है, UGC 2885 गैलेक्सी, जो कि 4,63,000 प्रकाश वर्ष के व्यास में फैली है। यह हमारी गैलेक्सी से 4 गुना बड़ी है और इसमें 50 खरब तारे मौजूद हो सकते हैं। पृथ्वी से 100 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर इससे भी और भयानक और बड़ी गैलेक्सी है, IC 1101 गैलेक्सी, जो कि 40 लाख प्रकाश वर्ष के व्यास में फैली हुई है और इसमें 1000 खरब तारे रहते हैं। इसके अंदर 30,000 से भी ज्यादा मिल्की वे गैलेक्सी जैसे। But the universe still doesn't end here. Beyond our galaxy lies Andromeda, our neighboring galaxy, which is about twice the size of the Milky Way and contains around 1 trillion stars. Then there are even larger galaxies, like UGC 2885 and IC 1101, which contain trillions of stars and are far bigger than anything we can easily imagine. Some galaxies are so massive that they make our Milky Way look tiny in comparison. And beyond galaxies, there are even larger cosmic structures, stretching across millions of light years. Finally, we arrive at the observable universe itself, which spans an astonishing 93 billion light years in diameter, and contains more than 200 billion galaxies. Each galaxy is filled with billions or trillions of stars and countless planets. Now stop for a moment, take a deep breath, and truly think about this. In front of something so vast, what are we? We are just one person among 8 billion people, living on a tiny planet, orbiting a small star, inside a solar system that is itself insignificant, within a galaxy we cannot fully comprehend. And all of this exists inside a universe that may not even have an end. So what makes us special? Why do we feel proud? Millions of years ago, dinosaurs ruled Earth for over 100 million years. They were larger, stronger, and more dominant than us. Yet a single asteroid wiped them out completely. In just one moment, their entire existence disappeared. That leads us to a powerful truth. In a single moment, the universe has the power to erase us too. Everything we are, everything we know, our past, our present, and our future can vanish instantly. So once again, ask yourself, what makes you special? Are we truly important, or are we just a tiny, temporary part of an infinite universe? And if nothing really matters at this scale, then maybe the only thing that truly matters is how we choose to live our lives. So tell me, what makes you special?